Good evening and welcome, friends. This Friday, 7 p.m. biggest story tonight, in which we are going to focus on what's up with the United States and Germany for poking nose in what is essentially an internal dynamic of India's democracy playing out in the case of Arvind Kejriwal arrest and the investigation that's on in Delhi Liquorgate. Why is it that twice question gets asked of the German Foreign Office spokesperson and the US State Department, and both time they are almost compelled to answer? Why is it that the same person is asking question of the US State Department and the United Nations? Is there some concerted attempt to tarnish India's democracy as we head into the world's largest democratic exercise in electioneering? We'll focus on that. Let me get you the headlines first. Kangna gives it back after red card slur, says those who disrespect women don't belong to Mandi. Income Tax Department issues fresh 1,700 crore notice against Congress party, says we'll move top court now. India's insult politics continues. Siddaramaiya's son fires Gunda attack on Home Minister Amit Shah. Politics over gangster Mukhtar Ansari's death. Samajwadi Party and Congress allege conspiracy. After United States and Germany, now the United Nations wades into Kejriwal arrest row. And from AI to UPI, Prime Minister and Bill Gates discuss India's digital revolution. A day after India said Washington's call for fairness in legal cases related to opposition parties was unwarranted and unacceptable, the United Nations has now waded into the controversy, saying the world hopes everyone is able to vote in the country's parliamentary elections in a free and fair atmosphere. As if they have any responsibility of something which we have been doing for the last 7 decades and more. Look at this package on what exactly has transpired, then I'll come back with somebody talking about what's really happening. UN after US and Germany raising questions about India's democracy. India taking a strong exception. Yesterday, India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Questioning of democracy leading to a diplomatic tiff. Ich komme zurück auf den Fall des verhafteten Oppositionspolitiker Arvind Kejriwal. Nachdem Ihr Kollege den Fall am Freitag kommentiert hat, wurde der stellvertretende Botschafter in Delhi vom dortigen Außenministerium einbestellt. Also Indien und Deutschland ein großes Interesse an einer vertieften Kooperation haben und da auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Insofern würde ich jetzt ungern hier aus vertraulichen internen Gesprächen berichten. All of it seems to be an orchestrated attack on India's democracy. And the face of the campaign, Bangladeshi politician journalist Mushfiqul Fazal Ansari. Ansari wanted in his country for spreading disinformation and booked under terror charges. But the question that remains is, who is behind the malign India attack campaign? Bureau Report, Republic TV. देखिए, प्राथमिकता जैसे इन्होंने बताया कि हमारा जो है क्षेत्रवाद कोई नहीं होगा, सब क्षेत्र का जो है वो इक्वल डेवलपमेंट होगा। आपके ओपोनेंट में गाड़ी खड़ी हो सकती है, गाड़ी प्रतिभा जो मैदान में आ रही है, 5 साल में वो यहाँ पर रही है, सांसद के तौर पर उन्होंने काम किया है, लेकिन हाँ ना जो है उनकी अभी चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है।
देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर उनको अब रेस्ट ही ले लेना है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम से वो चले आ रहे हैं। अब नए यंग लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और वो जैसा आप कह रहे हैं, वो खुद भी श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। तो अब जैसे हम लोग भी अब आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ नए चेहरे भी आने चाहिए राजनीति में। जैसे कि जो भाजपा है वो बहुत सारे नए चेहरों को राजनीति में ला रही है। अगर वो आती है तो मुकाबला मानोगे, आपकी मुकाबला उनके साथ है अगर वो आती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। हम लोग पूरी पार्टी में जो है, हमारा अब की बार 400 पार, ये हमारा प्रण है और ये प्रण को हम पूरा करके रहे, हम पीछे नहीं हट सकते। कंगना जी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही करेंगे या और भी कहीं जाएंगे क्या? वो भी प्रोग्राम जो हमारे लिए हुक्म होगा हम वही करेंगे। अब हम लोग ये पूरे कार्यकर्ता की सेना से जुड़ चुके हैं और हमें जहाँ भेजा जाएगा हम वही जाएंगे। कंगना, आप स्टारडम से रिलेटेड हैं, मानते हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो चैलेंज आता है, चैलेंज कर रहे हैं या इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू? नहीं, हर एक चीज़ का एक एज होती है, एक फेज होता है। एक टाइम था जब स्टार बनना उसमें ज़्यादा मन लगता था। अब इतना लोगों ने दिया है, इतनी लोकप्रियता दी है, इतना, जैसा कि सर ने कहा कि अगर हमारा फेस जो है यहाँ का उद्धार करा सकता है तो फिर हम लोग क्यों हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी लोगों की सेवा में जाना चाहते हैं। हर जिंदगी का एक अलग पहलू होता है। वोट भी टाइम अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचते कि वो कैसा था और ये कैसा है। सुप्रिया को कोई जवाब देना चाहेंगे या जनता जवाब? मैंने कहा है कि मंडी की जनता जो है वो सुप्रिया को जवाब देगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। और राहुल गांधी भी जो उनको जवाब मिल जाएगा। उनको जो है हमारे बैठे हुए हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, 400 पार का जवाब वो देंगे। धन्यवाद। बॉलीवुड की शेरनी अब हिमाचल की शेरनी बनने वाली है। देखिए, हिमाचल की सारी लड़कियां मैं कहती हूँ कि पहाड़ी लड़कियां, पहाड़ी भाई बहन जो हमारे हैं, बड़े बहादुर, बड़े मेहनती लोग हैं सबके सब। इसीलिए मैं चाहती थी कि मुझे यहाँ लोगों की सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद। तो खींचिए उसको। All right, that was Kangna Ranaut addressing media in Mandi. But earlier, she spoke exclusively to Republic's Harsha Chandwani and addressed issues around the rate card slur that has been hurled at her by Supriya Srinath of the Congress party, as also as a daughter of Mandi, what people should be expecting from her after she wins the election, as she said. Listen in. Look, as you can see, I have not transformed in any way. If you could have seen me like 2 or 3 days ago when my candidature was announced, I'm just the same person. I'm wearing my same clothes, the way I go to direct on my film sets. I'm just the same person. In fact, today people are saying that I have joined BJP, but for a couple of years now, people are accusing me of being a BJP party person, like pro-Hindu mindset. They always talk about you. Yes, and I've been actively fighting for BJP agendas because I resonate with the party, I resonate with the ideology and overall aesthetics of the party. I don't see any significant changes in my life apart from the fact that I am now in the field and I am looking for an active approval from people. How do you want to respond, Kangna, to the sexist remark and the rate card remark which was posed to you by the Congress politician? And she didn't even apologize about it. She just made an excuse that someone else was handling her Instagram account. How do you see those remarks on you post that? Look, I mean, of course, it's beyond appalling to I think probably this is the lowest level of mindset or the thinking where you ask a woman, what is the rate of her, like what's her rate? It's the lowest level of thinking. It's, there is no argument about that, and everybody feels so, regardless of her wanting or not wanting to apologize. But to me, am I taken aback? Am I surprised? I am not surprised by it because the way Congress party has always, have been conflicted in their very fundamental ideologies is rather,
natural for them because, on one hand, they are calling me somebody who has a rate card. On the other hand, based on my, my choice of clothing. And on the other hand, they would go and do dharna for the rights of burqa, all of that. And then they call themselves liberals as well. So they've been very conflicted and confused about what they want to be, who they want to align with, and who they want to, resonate or appeal to. So I'm not surprised by this sort of a confused, brain foggy sort of a thinking that they are displaying. Did it hurt you or affect you, and how do you see this Mandi Lok Sabha where Pratibha Singh is contesting against you? She will be contesting, there's no announcement of the name right now, but she says that where was Kangna Ranaut when there was a disaster in Mandi? Look, how do I see this remark? Of course, you are a woman, and you can, if you consider yourself in such a situation, you would be definitely very upset, and in a way, you'll double think you're venturing into a place where you will be vulnerable to all sort of attacks on your character and your worth. But having said that, the huge amount of support that I got is encouraging. And how do I... Pratibha ji. She has been a very senior politician. I think when we were growing up, from the time of my parents, they were in the, but I think I resonate with the BJP's idea of launching new people, and I think Congress party should also, because Pratibha ji has been very uncertain about, and I think somewhere I read that she thinks that she doesn't have enough, the age factor, she said something like that, right? Like she doesn't want to contest. Because of her age, something like that she said. I think I read that. I'm sorry if I'm being mistaken, but I think that's a good idea, because look, we've seen her in our childhood when we were really young, and now we are also getting grey hair. So I think high time that we want to be the change. Even from that side, we like to have a more young, dynamic person. But if not, I'm not saying that I don't have, I do have a lot of respect for what they've done. But high time that new people are given a chance. And your question was that where was I? I was shooting because they chose people and they should have been here when it was flooded. I was not the chosen person to represent by any party. So I was minding my own business, so to speak. And apart from that, the area was flooded. It was not safe to come here. And only it was also life-threatening to be traveling to this place for a significant amount of time when the tragedy struck. Did we lose? Yes, my sister lost her house. Yes. We lost many things. There were a lot of damages that happened. But we were hoping that the leadership that has been chosen from here, they do visit the lower areas also, but they were completely absent from here. So this question is better suited to people who were in power, not me. All right. Some would say Kangna Ranaut is the newsmaker of the day with the kind of attention she has been getting post the Congress attack on her. She putting across her stand. Moving on, Prime Minister Narendra Modi and Bill Gates discussed digital revolution in India as well as strides in health, agriculture and education sectors. Prime Minister also highlighted the G20 vision and how India brought G20 goals to mainstream. A snippet of that hour-long conversation that Prime Minister had with Microsoft founder Bill Gates. Listen in. Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है। और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है,
कि किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी। ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा, और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यू एडिशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए। जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। In areas like digital government, India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ। पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। और दूसरी बात एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। टीचर की जो कमियां हैं उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। All right, Prime Minister having that engaging conversation with Bill Gates also discussed digital revolution in India as well as strides in health, agriculture and education. And we have seen how he was talking about some aspects of technology which he has used in his governance. Let's listen into another one of the snippets coming out of that hour-long interaction. क्लाइमेट को लेकर के हम बात कर रहे थे। भारत, मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम काफ़ी काम, हम न्यूक्लियर के अंदर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु में था तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहाँ से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा की मेरी जो मूवमेंट है उसको भी मदद मिलेगा। एनवायरनमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ से एक मैसेजिंग होता रहेगा। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. How do you see connecting those? हमारे यहाँ रीयूज, रिसाइकल ये हमारे नेचर में है। अब देखिए ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जो टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। Yeah, the innovation both here in India and the world is coming along. Are the goals that we set, staying below 1.5 degrees, we probably will miss that. Even 2 degrees isn't going to be so easy. And the thing you and I really emphasized in Paris is the need for innovation. If the green approach can be made as cheap or cheaper than the old approach, then the adoption will be very good. If it's more expensive, it's not clear who's going to be willing to pay for that. Should the rich countries pay for that? It's not fair to tell India to slow down, building basic infrastructure
just because the West had those emissions, but you'll have to have some adaptation because there will be some warming, particularly which farmers will have to take into account. मुझे लगता है कि हमने टू प्रॉन स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाहिए. एक तो है इनोवेशन, और इनोवेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे हो, नेचर फ्रेंडली कैसे हो, उसमें इनोवेशन हो. भारत ने अभी अपने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है, और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशंस के लिए आइए. 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे. Right, on that note, we slip into a short break. On the other side, Income Tax Department issues fresh 1,700 crore notice to the Congress. The party says will move top court now. Politics over gangster Mukhtar Ansari's death. Samajwadi Party and Congress allege conspiracy.